हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश बाल भारती 3.3 द लास्ट लीव इस लेसन के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स लेकर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टोरी एंड चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग्स। स्टोरी रीड करके मीनिंग आपको चूज कर लेना है। तो फर्स्ट वन है स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। कौन है? आर्टिस्ट ट्राइंग हार्ड टू लर्न अ लिविंग। उसके बाद है स्केलेटन ब्रांचेस। आंसर bare branches. After that, welded the brush. Answer है painted skillfully. After that, palette. Answer है a board used by artists to mix colors. Masterpiece, an exceptionally beautiful work of art. Question number 2 है make pairs of sentence to show the difference between the meaning of the following homographs from the story. स्टोरी में ऐसे कौन से होमोग्राफ्स है उनका मीनिंग डिफरेंट है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। सो फर्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट, नेक्स्ट वेल। इन दो सेंटेंस में हमने वेल ये वर्ड यूज किया है पर वो डिफरेंट है क्योंकि वो होमोग्राफ्स है। यहाँ पे लीफ वर्ड यूज किया है, आफ्टर दैट जस्ट वर्ड यूज किया है, आफ्टर दैट माइंड ये वर्ड यूज कर लिया है। ओके, पॉज करके अच्छे से राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट द फैक्ट्स अबाउट द स्टोरी। स्टोरी के फैक्ट्स आपको स्टेट करनी है। सो ये है आंसर। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सो एंड जॉनसी वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ये है राइट। सो वॉज अ रिच गर्ल, आंसर रॉन्ग। जॉनसी वॉज होपफुल दैट शी विल लिव, आंसर रॉन्ग। डी क्वेश्चन Behrman was a hard-hearted person. Answer wrong. The last leaf fell off during the rain. Answer right. F question Jhansi realized that her thinking was wrong. Answer right. Behrman did not know anything about the last leaf on the EV. Answer wrong. Question number 5. Correct the following statements. Sue and Jhansi were good neighbors. So correct statement say they shared a fact that set up a joint studio. B question Jhansi was eager to recover from her illness. So correct statement है she had made up her mind that she was not going to get well. C question Sue ignored Jhansi completely. करेक्ट स्टेटमेंट है सू टूक वेरी गुड केयर ऑफ जॉन्सी। क्वेश्चन डी बेमन वाज अ वेरी हार्टलेस पर्सन। करेक्ट स्टेटमेंट है बेमन वाज अ वेरी काइंड पर्सन। ये क्वेश्चन है द रियल ईवी लीफ डिड नॉट फेल ऑफ एट ऑल। आंसर द रियल ईवी लीफ फेल इन द हेवी रेन, ये है करेक्ट स्टेटमेंट। आफ्टर दैट एफ क्वेश्चन द लास्ट लीफ वाज अ रियल लीफ दैट सर्वाइव्ड। So correct statement है the last leaf was the leaf that Mr. Behrman had painted on the wall. Question number 6. Read the descriptions of the following from the story and describe any one of them using your own words. So ये है answer. After that Behrman भी है। Next page पे भी answer है। ओके यहाँ तक ये आंसर है। पॉज करके राइट डाउन कर लो। इन द फॉलोइंग सेंटेंस पॉइंट आउट द मेन क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सर्कल द सबऑर्डिनेटर। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है देयर वाज अ कॉलोनी वेयर मेनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव्ड। तो यहाँ पे मैंने मेन सबऑर्डिनेटर दे दिया है। बी क्वेश्चन थू सू लुक्ड आफ्टर हर वेल,
जॉन सी शो नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे मेन, सबऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेटर मैंने यहाँ पे दे दिया है। सी सेंटेंस है, सू थॉट दैट शी हैड फॉलन अस्लीप। तो यहाँ पे मेन, सबऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेटर। Old Bearman was a painter who lived on the ground floor। तो यहाँ पे मेन, सबऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेटर दे दिया है। ये क्वेश्चन, जॉन्सी was sleeping when the two went upstairs। आंसर, मेन है यहाँ पे, जॉन्सी was sleeping, सबऑर्डिनेट है the two went upstairs, सबऑर्डिनेटर है when। अब क्वेश्चन, I want to see the last one before it fails। आंसर, मेन में है I want to see the last one, सबऑर्डिनेट है it fails, सबऑर्डिनेटर है before। क्वेश्चन नंबर 8, compose any imaginary dialogue between Sue and John C when they realize about what Behrman had done for John C। So यहाँ पे मैंने डायलॉग दे दिए हैं। ओके, इमेजिनरी डायलॉग है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो रहे हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।